नमस्ते, राम राम, हेलो, हाय एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। आज हम बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज बांग्लादेश इज बर्निंग एंड उसके साथ में कुछ ऐसा हो गया है कि इवन आफ्टर ट्रम्प के कहने पर कि ही इज वरीड अबाउट द कंडीशन ऑफ द हिंदूज इन बांग्लादेश, बहुत कुछ होता चला जा रहा है। और मेरे गेस्ट, माय फेवरेट एंड एवरीबॉडीज फेवरेट सलाह शोएब चौधरी जी, एडिटर ब्रिक्स। Dada, most welcome. And Thank I'm you. very much worried, I'm very sad about what is happening in Bangladesh. Because वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज तो चुप हैं अबाउट द कंडीशंस ऑफ द हिंदूज, बट एमईए ने और ट्रम्प ने कैटेगोरिकली बात ये बोल दिया है कि ही इज वरिड अबाउट द हिंदूज। बट उसके बाद भी कुछ ना कुछ वहां पे होता ही चला जा रहा है हिंदूज के लिए। मोहम्मद यूनुस इज नॉट लिसनिंग टू ट्रम्प। हैज ट्रम्प आउटलॉड, हैज ही बिकम अ कार्गो? बिकॉज आप एक आर्टिकल था जिसको आपने ब्लिट्स में अभी पब्लिश किया है, जिसमें आपने बोला है कि ही हैज बिकम, यूनिस हैज बिकम अ कार्गो, Heavy cargo. Heavy heavy cargo. cargo, heavy cargo. How do you see it? And why did you write this thing? धन्यवाद। देखिए, ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दी और यूनुस अमेरिकन इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी स्टेटमेंट दी रिगार्डिंग प्रोटेक्टिंग द रिलीजियस माइनॉरिटी हिंदूज। Hmm. सो अभी ट्रम्प साहब की जो स्टेटमेंट है, ट्रम्प साहब को वो स्टेटमेंट की जो consequences, if you Hmm. don't listen to him, the consequences, then it is consequences cannot come now. It can only start coming from January 20th. And why I said heavy cargo? देखिए, यूनुस साहब की एक ग्लोबल इमेज थे, भारत में भी थे। He went to Assam a couple of years ago promoting microcredit, and राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के को supporters, they were praising Yunus like an avatar. Some journalists in Assam, that guy was writing in favor of Yunus, portraying him as a devta. I told him at that time that Yunus is no devta. But people had wrong perception in Bangladesh, in India, everywhere. अभी उन्होंने जब आ गए पावर में 5th of August के बाद, और he has on publicly he has admitted in the program organized by Clinton Global Initiative that he knows the masterminds of these Takta Parak, meaning he was very much aware of it. Abhi, why Bangladesh government is not paying attention or values or heed to what MES said and what Trump said. Yunus Saab is anti-Trump. He's a Trump hater. Yunus Saab is branded as a person of Democratic Party. Only not that, he is the top donor of Clinton Foundation, and he is a personal friend of the Clintons and Obama and Soros. So अभी होता नहीं है कि उन्होंने के जो ट्रम्प ने विन कर ली इलेक्शन, इसके बाद तो उन्होंने हम लोग जो हिंदी में कहते नहीं छुट्टी हो गई. So he knows that his time is over. अभी जो आप जो गेम खेलते हो आपको पता चल जाता है कि you are losing this game for sure. Then you just start doing whimsical things. So for that reason, he is not paying attention to Trump. आप कहेंगे कि इसका कोई नतीजा नहीं है, बहुत बड़ा नतीजा है. The way I told your audience several weeks ago that Trump is winning, Kamala is losing. Now I'm telling you, immediately after Trump assumes office, he is going to impose 30 to 35% tariff on all exports from Bangladesh. He is going to impose sanctions on lots of people in Bangladesh, including Mohammad Yunus. I repeat, including Mohammad Yunus. ये शायद मोहम्मद यूनुस के भी पता है. And for that reason, he is actually attention pay नहीं कर रहा, ये नहीं है. He is just he knows that ये अभी कोई फायदा है नहीं. And about MEA, Ministry of External Affairs in Bharat, this government has been all through very much anti-India, anti-Bharat, anti-Hindu, pro-jihadis. So उसके तो दुश्मन ही है भारत.
और अभी भारत के बात सुनने से क्या फायदा? भारत विल नॉट कीप हिम इन पावर इवन इफ ही लिसन्स टू देम. सो अभी 5 अगस्त जब तख्ता पलट हुआ, we all of us, you and I and all of us, we were worried about the future of Hindus in Bangladesh. We did not know how long it will continue. Now at least we know that at least January 20th, that is the deadline. Maybe before that, ये हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद होने वाला है. जी कहिए. दादा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी कल की ही बात है कि जब ट्रम्प सपोर्टर्स जो थे, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उनको उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए एक प्रोसेशन निकालने वाले थे, मगर हिंदूज के ऊपर तो अत्याचार हो ही रहा है. अभी एस्कॉन का जो एक केस है बिल्कुल नया नया है, बट ट्रम्प सपोर्टर्स को भी जो है उनको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया. एनफोर्समेंट जो आप बांग्लादेश में जो है एनफोर्समेंट पुलिस ने, लाइक ट्रम्प सपोर्टर्स के साथ में भी ऐसा किया जा रहा है. तो वेयर इज इट लीडिंग टू? No, Trump, I told you na, Yunus Saab is Trump hater. He hates Trump. So वो तो घृणा करता है ट्रम्प को. So why he will allow anyone celebrating Trump's victory? If Kamala Harris won the election, वहाँ तो बहुत इलेक्शन में सेलिब्रेशन होता, शायद यूनुस भी जिला भी बैठते, मगर अभी तो ट्रम्प के सेलिब्रेशन he will not allow because his friends has been defeated. एंड मैं और एक बात कह रहा हूँ कि आज जो घटना घटा है कि रिगार्डिंग दिस विक्ट्री सेलिब्रेशन ऑफ ट्रम्प, इसके ऊपर जो हुआ है, only I can tell you that it is going to bear a very serious consequence, very serious, and that consequence you don't need to wait until 20th of January. It will happen anytime. Why? Why? I'm telling you why. Because ये जो काम कर दी और पूरी के पूरी मीडिया में आने लगा, आ जाएगा आपके यहाँ आगे और यहाँ वहाँ टेलीविजन चैनल्स में भी आ रहा है. सो बांग्लादेश में जिन्होंने यूनुस को बैठाया पावर में, they will be they have started feeling insecure कि भाई ये क्या कर दिया, ट्रम्प के सेलिब्रेशन को ऐसे अरेस्ट कर दिया, पिटाई की, और स्लोगन भी हुआ कि इसको भी जमा करने के लिए स्लोगन हो गया, स्लोटर करने के, जैसे हिंदू को स्लोटर करने की हुआ 2-3 दिन आगे चटगांव में, आज ढाका में भी हुआ एक स्लोटर करने वाला स्लोगन हुआ. सो फॉर दैट रीजन आई मीन जो जिन्होंने ट्रम्प को बैठाया, जितने सिविल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने तो हमारे आर्टिकल में लिख दिया है प्लेस में कि यूनुस इज अ हैवी कार्गो, भारी बोझा है. So I think they will take care. You will see what is happening. I don't believe that it will take even 1 week to see the consequence. दादा, वन थिंग कम्स टू माई माइंड, जो इतना सब चीजें होती चले, लाइक यूनुस नोज कि उसका एंड क्या होना है और उसके साथ में क्या हो रहा है, उसके जो सपोर्टर्स है उनके साथ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. ही नोज दिस थिंग, इज वेरी मच अवेयर ऑफ इट. I want to ask you, despite this fact that he knows about his fate, इतना ताकत, इतना स्ट्रेंथ, इतना करेज उसके पास कहां से आ रहा है to repeat the same things? Is the deep state still working? Is the Soros and his gang still working, that who is giving him the courage, knowing the fact that he won't be there? बात ऐसा नहीं है. यूनुस साहब ने जो रिस्क लिया, thinking that his friends are in US, and he was confident that Democrats are coming to power. I mean, Kamala, she would win. अभी जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई ट्रम्प का, सो अभी उनको तो पता चल गया कि छुट्टी हो गई. सो अगर वो यही छुट्टी के बाद किसी को समझने दे जो उनके आजू बाजू में हैं, सब तो जिहादी है, इस्लामिस्ट है, गुंडे हैं, तो वो तो अबे अब तक तो सड़कों में जाके मॉब जस्टिस कर रहा है, पिटाई कर रहा है लोगों को. अगर यूनुस साहब की जबान से ऐसा आ गया कि भाई नाउ आई एम हेल्पलेस, दे विल स्टार्ट बीटिंग हिम, दे विल किल हिम. सो टू सर्वाइव कई और दिन, मैंने कहा उस दिन आपको कि ये लाइफ सपोर्ट में है, लाइफ सपोर्ट में. सो अभी कोई किसी और दिन, 1 दिन, 2 घंटा, 5 घंटा ऐसा, बट इट इज व्हाट ही इज डूइंग नाउ, इट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ darkness. He is in total darkness now. He does not know what is happening.
He knows what may happen, but he cannot tell this. आप एक फैमिली चलाते हो, सो आपका भी फैमिली है, चलिए अगर फॉर एग्जांपल यू आर residing in a rented house, and if you let your landlord know that you don't have any ability anymore of paying the rent, then the landlord will immediately evict you. ऐसा आपकी हालत ऐसा है सेम. आई कॉल इट ऑस्ट्रिच सिंड्रोम, जिसमें कि एक ऑस्ट्रिच अपने रेत में अपना मुंह पूरा डाल देता है, उसके बाद में उसको लगता है कि जो डेंजर है वो टल गया है, बट इनफैक्ट डेंजर इज जस्ट स्टैंडिंग एट द डोर. एंड यूनुस इज बीइंग फुलिश, आई थिंक, इस चीज को व्हेन ही इज नॉट रियलाइजिंग दिस थिंग. दादा, वन क्वेश्चन. अभी अनवर चौधरी, who is the leader of Awami League, he has filed a complaint against Muhammad Yunus and 62 others in International Criminal Court ICC. How do you see it? Is it going to affect? Will there be any effect of it? Any result out of it? International Criminal Court itself is a controversial organization. And International Criminal Court में ऐसा है नहीं कि आप एक पिटिशन दे देंगे और इसके जल्दी जल्दी एक्शन हो जाएगा, ऐसा होता नहीं. एक्शन के लिए कई महीना लगता है, साल भी लगता है, 2-3 साल भी लग जाता है. So I mean, at this moment when the government itself is in the life support, so I don't know, it has no impact. Immediately हो जाता, कल परसों 10 घंटे में, तब तक बात ही, it will take 6 months, 2 years. And Bangladesh, Yunus side will also send their lawyers to defend themselves. So ऐसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कुछ भी होने के लिए मिनिमम 1 year लगता है. So मतलब it is a futile exercise. एक साल It के is a बाद futile कुछ होने वाला exercise. फ्यूटल, बिकॉज मुर्दा आदमी के खिलाफ अगर आईसीसी एक वारंट दे देगा तो इसके क्या वैल्यू है. दादा, यू आर ए वेरी रिनाउंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और ब्लिट्स वीकली बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड मीडिया में है. इंडिया ने अपना कंसर्न दिखाया फॉर द हिंदूज इन बांग्लादेश, द एट्रोसिटीज दैट आर हैपनिंग. ट्रंप ने भी दिखाया अपना कंसर्न ऑन द एट्रोसिटीज दैट इज बीइंग थ्रोन ऑन द हिंदूज इन द बांग्लादेश. But the Western world, US, UK, Canada, everybody is silent. US is there, sorry. UK, Canada, everybody is silent. How do you see this? Because it's a matter of great shame. शर्म की बात है सबके लिए, दुख की बात है. ऐसे लगता है कि भाई हिंदू की जान का कोई मूल्य, कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. हिंदू बहन, माँ बहन की जो इज्जत का भी कोई वैल्यू नहीं है. और ब्रिटेन में कहिए या कनाडा में कहिए, ऑस्ट्रेलिया में कहिए, यूरोपियन यूनियन में, in your previous show I said that Hindus are holding top positions everywhere. So मैं कहूँगा कि यहाँ एक प्रॉब्लम जो है कि those Hindus who are affluent Hindus, जिसके पास पैसे हैं भारत में भी, वो उनका पैसा पहले तो खर्च करना नहीं जानते. मैं खर्च करना नहीं चाहते नहीं कहा, खर्च करना नहीं जानते. They will not give money. They will not give money to your channel. No, they will give money to those who will be of no use during their time when they want. Number one. Number two है कि Canada is under Justin Trudeau. Canada is a rogue state, very much a rogue state. भारत की दुश्मन है, another country. And UK, European Union क्या है कि UK, European Union is busy with possibly with Gaza and Ukraine, etc. And मैंने फिर से कह रहा हूँ कि जो मैंने बहुत बार कहा, बहुत दफा कहा आपके शो में, सारे टेलीविजन चैनल्स में, कि हिंदू शक्ति कोई दिखा नहीं रहा है. यूके पार्लियामेंट में, यूके पार्लियामेंट के सामने 50 या 100 मिनिमम हिंदू जाके एक रैली करे, होल्डिंग प्लैकार्ड्स. ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में, सारी यूरोपियन यूनियन में करे. सो कुछ ना कुछ तो नतीजा, रिजल्ट आता है, मगर उन्होंने तो कुछ नहीं कर रहे, सब चुप है. चुप है कि आई मीन
what I say, I mean, maybe they are thinking, okay, बांग्लादेश में जो हिंदू है उसको मानने दे, हमारा क्या, हम तो आराम में हैं, लंदन में है, फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है. I think this is the very unfortunate. मगर ये चीज मुसलमान के साथ चलता नहीं है. अगर आप मुसलमान को काटेंगे भारत में, ऐसा काटते नहीं, काट आप काटते भी नहीं, फिर भी आपके खिलाफ कुछ ना कुछ हो रहा है. अगर इसे काटते, बलि देने के लिए ओपनली डिक्लेयर करते, देखते कि सारे दुनिया में 1000 मुसलमान सड़कों में आ गए प्रोटेस्टिंग. सो आप कुछ भी नहीं करते मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के खिलाफ. आप उसको इज्जत दे रहे, प्रोटेक्शन दे रहे, बल्कि ऐसे बहुत मुस्लिम है जो भारत के खिलाफ भारत में बैठ के काम कर रहे हैं, फिर भी आप यू आर टॉलरेटिंग. और आई मीन फिर भी आपके खिलाफ कितनी बात हो रहा है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, सब जगह पे. तो मेरे को लगता है कि ये जो हिंदू शक्ति है, हिंदू वॉइस है, इट इज नॉट देयर एट ऑल. कोई आप हमें तो मैंने तो दिखा नहीं कि गाजा में जो चीज हुआ, हजारों स्टूडेंट they rocked into the stormed into the campuses in the US, in UK, in every country. तूफान लगा दी, तूफान मचा दी, हंगामा लगा दी. So Hindus are not actually I don't think to Hindus the lives of Bangladeshi Hindus at all matter, because सोच रहा है कि बांग्लादेश में 2 करोड़ हिंदू भी है, मर जाए नहीं तो क्या प्रॉब्लम, मर जाए. I think, and maybe Hindus in India also, they also consider Bangladeshi Hindus as outsiders. ये जो खून की एक रिश्ता होता है कि हिंदू हमारा भाई है, जहां भी हिंदू काटेगा मैं बात करूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा, ऐसा यूनिटी आपके पास, आपके देश में है नहीं, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन. आप हिंदू राष्ट्र है, नो डाउट, मगर आपका राष्ट्र इज डिवाइडेड. अभी देखिए कि आपके जो हिंदू वोट्स है, 80 करोड़ लोगों में जितने वोट है, वो वोट तो डिवाइडेड. बिल्कुल. Only a part of the vote is going to BJP and nationalist forces, and rest of the votes are going to anti-nationalist forces. Or this is a very big plus point. Hindu votes have already been divided in Bharat, while Muslim votes remain united, and they are voting in favor of the party which is enemy of Hindus. Absolutely. मगर आप बांग्लादेश में आकर देखेंगे या कोई भी मुस्लिम कंट्री में देखेंगे कि बांग्लादेश में तो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ हिंदू है. सो 2 करोड़ हिंदू अगर हिंदू के एक पार्टी होते, हिंदू लीग या व्हाटएवर, and if the Hindus would have voted in favor of their candidate, there would be many Hindu MPs and ministers in this country. मगर बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्या हो गया कि सारे के सारे मुसलमान को वोट देते हैं. 18 करोड़ में 16 करोड़ पॉपुलेशन में जितने वोटर्स है, they are giving vote to Muslims. They are never giving vote to anti-Muslims. No, they are not giving vote to Hindus. आपके देश में ज्यादा से ज्यादा वोट जा रहा है एंटी हिंदू वोट बैंक में, और इसके लिए यू आर अ डिवाइडेड नेशन. एंड बिकॉज भारत इज द हिंदू राष्ट्र मीनिंग it is the model, it is the home of all Hindus of the world. I mean, real home or spiritual home है, जैसे कि Israel is the spiritual home to every Jews. So आपके जो होम होता है हमारा हिंदू धर्म की, वो होम ही डिवाइडेड. So Hindu voice is divided, and that is why there is silence. करेक्ट. ज़्यादा बहुत डीप और बहुत सही बात आपने बोली. एंड दिस इज द फैक्ट विच एवरी हिंदू हैज टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज अगर हिंदुस्तान नहीं रहेगा, भारत नहीं रहेगा, तो वेयर आर वी गोइंग? जो एंटी नेशनल फोर्सेस है, दे आर एंजॉयिंग, दे विल एंजॉय आफ्टरवर्ड्स आल्सो, बट द मेन सफरर्स आर. कैन आई से समथिंग? देखिए, ये जो आप जो अगर हिंदू, जितने हिंदू है सबको सम्मान करके मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो वोट देते हो राहुल विंची को या इसके पार्टी को, सो आप तो सोच रहे हैं कि ये भारत के बहुत ही महान लीडर है.
मगर आप ये राहुल विंच सबको जात पूछता है, धर्म पूछता है। आपने कभी राहुल विंच को पूछा कि उसके जात क्या है, उसके धर्म क्या है? राहुल विंच कहता है वो क्या ब्राह्मण है, उसके जो आई एम सॉरी, उसके जो दादा हैं ही इज अ पारसी, then his mother is a Catholic Christian, he himself is a Catholic Christian. A Catholic Christian आपको आके जात सिखा रहा है, धर्म सिखा रहा है, और आप कुछ भी बोलते भी नहीं, क्योंकि उसके आजू बाजू में you know I am telling them they are only HINO, Hindu in name only. वो जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने हिंदू हैं, दे आर एक्चुअली नॉट हिंदू, दे आर HINO, हिंदूज इन नेम ओनली। और वो हिंदूज इन नेम ओनली, दे आर ऑलमोस्ट डूइंग पूजा एंड आरती उठाते हैं ये विंची के और मैनो के और सारे फ्रॉड डायनेस्टी के। सो आपने कभी पूछा नहीं कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा जाति क्या है, और तुम अगर हिंदू नहीं हो, यू कैन नॉट रिमेन लीडर ऑफ दिस कंट्री। और अगर कोई मिनिमम शर्म है, जितने हिंदू हैं वो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट हिंदूज, दे आर HINO, but if they want to really become, prove to me that they are Hindus, not they should leave that party. They should vote for nationalist forces, Hindu nationalist forces. ये अगर नरेंद्र मोदी जी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो या जो भी हो, vote for Hindus, because Hindus will protect the right of Hindus. Non-Hindus will never protect the rights of Hindus. आप अगर ऐसे एक आदमी के पीछे भाग छोड़ रहे हो, who himself is not a Hindu, and he is asking your धर्म, आपके जात पूछ रहा है, आपके धर्म पूछ रहा है, और आपका इतना ताकत भी नहीं है कि आप जाके पूछे कि अभी बता तेरा जात क्या है। पूछा है दादा, बहुत लोगों ने पूछा, बट इट ऑलवेज एक जिप लग जाता है उसके। एंड जितना कांग्रेस का जो उनका सिस्टम है पूरा ट्रोलिंग पे उतर आता है ऑन द सोशल मीडिया, बट देयर इज नो रिप्लाई टू दिस थिंग कि उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका गोत्र क्या है। जो भी उसने बोला है सब गलत बोला है, जो कि सिर्फ इलेक्शन टाइम पे होता है। एंड हिंदूज हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, फॉलोअर्स ऑफ राहुल विंची हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, followers of Congress have to understand this thing now, because country is going into drains now. This is a fact. अगर अभी हम नहीं जगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आपकी हालत सोवियत यूनियन की तरह होगा, आपके देश टूट जाएगा। आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड, Rahul Vinci is the Mikhail Gorbachev for India. Mikhail Gorbachev ने जैसे सोवियत यूनियन का तोड़ा, Rahul Vinci will break away your country because this country does not belong to him. मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि भारत के जितने अफ्लुएंट या मिडिल क्लास पीपल है, सबके एक अपना घर होता है, आपका भी एक अपना घर है, और जो आपसे कम इनकम करते हैं उनके भी एक घर होता है ना कहीं एक घर होता है, गांव में भी होता है, घर है, बिकॉज ये मिट्टी आपका है। राहुल विंची का अपने के घर कहाँ है बताइए आप? Where is his own home? Why he is living on 10 Janpat for decades after decades after decades? Why he does not buy a piece of land in Delhi and construct a house? Why? Because he did, ये जो क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी है, आया है लूटना खत्म तो चला जाएगा भारत को तोड़ के, और उस वक्त आप समझेंगे कि ये कितने बड़ा बेईमान था, मगर वो तो बहुत देर हो जाएगा उस वक्त। अगर आपको इतनी इच्छा है सबके कि भारत नाम के एक देश होगा, सिर्फ इसके दिल्ली में एक देश होगा, उसका नाम भारत होगा, बाकी सब के सब दूसरा नाम होगा, सपोर्ट फॉर राहुल विंची प्लीज, because you are doing a great service to the enemies of India. You are doing a great service to the enemies of Hindus by supporting him. And हमारे को लगता है कि पाकिस्तान या ISI कहिए, ये भारत के जितने दुश्मन मुल्क कहिए, सबसे जिगरी दोस्त है अभी वो HINOs, and supporters of this INC. Next elections coming up in Jharkhand and many other places. So decide. अभी आप देखा है, just recently
कंक्लूडेड इलेक्शन अमेरिका में आपने देखा है कि बहुत सारे डेमोक्रेट्स डिक्लेरेशन दे के पार्टी छोड़ के ट्रम्प के लिए वोट किया। दे वोटेड फॉर ट्रम्प एंड पब्लिक सेड वी हैव अबैंडन डेमोक्रेटिक पार्टी। मैं देखना चाहता हूं कि कांग्रेस के लाखों लोग आ जाए, सोशल मीडिया में पोस्ट डाले कि राहुल विंची सिंस ही इज नॉट हिंदू, his mother is not Hindu, we are leaving this party or we are not going to vote for this party at least for next 30 years. Then you empower, give power to Hindus, give power to Hindu leaders, give power to nationalists, and then only India will become a country very powerful in real sense. Abhi India powerful country hai nahi because you are divided. करेक्ट। हिंदू राष्ट्र तभी होगा जब हिंदू सब एक होंगे। हिंदू राष्ट्र अगर नहीं होगा, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा by 2030, I'm telling you, I don't know if I will be alive or if you will be alive, I don't know because, but I'm telling you, by 2030, India will be tukra ho jayega, divided into many pieces. If you don't establish Hindu Rashtra, if you don't vote for Hindus, if you don't vote for Hindu nationalists, if you still are addicted to the वो जो ओपियम आपको खिला दिया है, सेकुलरिज्म के ओपियम, जात के ओपियम, धर्म की, ये जो राहुल विंची फ्रॉड आपको जो हर दिन नया एक दावा पिला रहे, if you cannot come out of this addiction, at the end of the day, those who are voting for this fraud family, you will be the main loser. कि आपके एक देश तो है ना गर्व करने के लिए, दुनिया के सबसे बड़ा देश है। सोवियत यूनियन वाज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और वो सोवियत यूनियन टूट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। आज आपके एक जो गर्व करने के लिए एक देश है भारत, कहने से ही लगता है कि बहुत बड़ा चीज है, हिमालय से ऊंचा और इतने बड़ा के आसमान से भी बड़ा है भारत। मैं कह रहा हूं by 2030 this country will break into many pieces and you are very much cooperating with the enemies of Bharat. I have nothing to lose. I am not a citizen. एक मैं को आपको एक बात कह रहा हूँ इजाजत लेके कि कई दिन आगे एक stupid YouTuber, a woman, she interviewed me and was asking me why I am talking about Rahul Vinti if I have Indian Aadhaar card. So, you know, a journalist doesn't need Indian Aadhaar card. So there are many stupids like this. And किसी ने कहा है मुझे कि वो लेडी नेशनलिस्ट है और समझता भी नहीं कि if she is nationalist by asking me that question, she is serving the purpose of Congress and Rahul Vinti. So ऐसे आपके नेशनलिस्ट में भी कोई कई लोग हैं, इसके जो परसेप्शन क्लियर नहीं है। भारत को बचाना है, भारत को बचाना है, भारत को ताकतवर करना है। You have to make it a Hindu Rashtra as soon as possible. You have to unite against behind Narendra Modi ji, Yogi Adityanath ji, whether irrespective whether you like him or not, don't judge. नरेंद्र मोदी के कोई बच्चे हैं नहीं, योगी आदित्यनाथ जी के कोई बच्चे हैं नहीं, आप सब उनके बच्चे हैं। They are doing things for all of you. And those fraud dynasty, fraud family, राहुल विंटी, अभी वो उसका भांजा को भी ले आया। नरेंद्र मोदी जी तो 10 years तक पावर में है, 10 years कि उन्हें कोई भांजा या कोई लाया, because he doesn't have a family, he is a सन्यासी। So भाई ऐसे सन्यासी चाहिए भारत के लिए, भारत राष्ट्र होना चाहिए। And if you want to, if you really love your country, कि आप इतना बात सोचे कि आपके एक मकान है कहीं भी भारत के और उसको तोड़ने की कॉन्स्पिरेसी हो गई और आप क्या करोगे उस वक्त? पूरा फैमिली मेंबर एक हो जाओगे to save that house. Correct. Otherwise your house is fallen. So Bharat is falling and you all are responsible for that, unfortunately. Correct दादा, बहुत डीप बात आपने बोली है। आई रियली विश कि मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी आज ये वीडियो को देखेंगे, इसको इस पोर्शन को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा और इसको घोल करके पी जाइए। बिकॉज अगर हम यूनाइट नहीं होंगे तो हमारा देश जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा।
नंदिता जी, मैं एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोई सोचेगा कि ये नरेंद्र मोदी का दलाल है। अभी तो किसी ने मुझको कह दिया कि अदानी का दलाल है, अभी नरेंद्र मोदी जी के दलाल ये या योगी आदित्यनाथ जी के दलाल। भाई मैं ये किसी को मैं जानता भी नहीं हूँ, ना तो नरेंद्र मोदी जी को, ना योगी आदित्यनाथ को, किसी को मैं जानता नहीं हूँ। मैं एक चीज जानता हूँ कि भारत मेरा पड़ोसी राष्ट्र है। इट इज लाइक माई ओन फैमिली रिलेटिव, मेरा अपना है। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। और आज के जो यंगर जनरेशन है, जिसके जन्म हुआ आफ्टर 1990 के बाद, उनको पता भी नहीं कि सोवियत यूनियन को कैसे तोड़ा गया। कि आई वर्कड द chief of Soviet news agency, so I have seen how the Soviet Union was broken and made into Russia. और अभी जो रशिया को सारी दुनिया धमकी देता है, वो तो सोवियत यूनियन को दे नहीं सकता, विच वॉज बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो मैं कह रहा हूँ कि भाई किसी के दलाल में हूँ नहीं। अगर आप तो दलाल समझते हो मुझे, तो मैं एक बात कहता हूँ कि मैं अगर दलाल हो तो पूरे भारतवासी का दलाल हो। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच दादा। वी स्टार्टेड विद बांग्लादेश, बट आई नो भारत आपके भी दिल में धड़कता है, एंड यू आर वेरी मच कंसर्न, वेरी मच वरीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू भारत एंड व्हाट कैन हैपन टू भारत। सो थैंक यू सो मच इतना सारा चीजें शेयर करने के लिए। एंड फॉर माई व्यूवर्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए। और आज का जो पोर्शन जो दादा ने बोला है, मैं उसको शॉर्ट्स में लेकर के आऊंगी, उसको आप जरूर रिपीट करके सुनिएगा कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। एंड वी कैन बी द लूजर इफ यू डू नॉट यूनाइट। थैंक यू सो मच नमस्कार। दादा। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।